आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है दिस इज व्हाई यू शुड विजिट इंडिया जॉ ड्रॉपिंग मेघालय नेचर पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके बाद व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Wow guys, wow, another day, another video guys. Good morning. Good morning. It's early really in the morning. Early in the morning guys, early risers with Kariko. He's similar face, you know him guys? Another day exploring, but today we're in Sora guys. We're a little bit far away, 2.5 hours drive. And today we're in the Garden of Caves. We're gonna explore all around Sora, and as you can see, it gets epic. Beautiful guys. Beautiful start. Today also very foggy, but it makes it epic. So let's explore today guys. And today we all both better equipped. He Okay. also has his wonder shoes and a really nice hat. I think I wanna also get some safari. डिफरेंट है ना। Decathlon sponsor us. केव्स बने हुए हैं। हाँ, Today this is really Natural adventurous. caves, This है is ना? actually a cave place. Noah said. No, what's the name? Cave garden, I think. Cave so. garden. It's many Cave little garden. caves, and you can really explore throughout. And it's not like you can see, it's not closed cave, but very Okay. many hills, rocks, and overlays. Yeah. So मतलब ऐसे ही बंद नहीं है। It's really nice here, but you have to watch out. बारिश हो रही है ना, The हाँ, rain. तो नाम मजे का वेदर है। तो पानी के साथ पानी की आवाज कितनी अच्छी लग रही है। look at the spider web. ऐसे किसी मूवी का सेट। हाँ, Guys, we're really hyped to explore today. He took us again with him. So, what a nice guy. So epic. And he said we can even bath here if we want to. So, guys, I should have taken my swim shorts with me. इसे प्रॉपर एक पार्ट बना है। Man, I think today was going to be 10 times epicer than last time. Yesterday, I think so too. Look, what a nature can do. Look at this, there's multiple bridges. बात ही अच्छी लगती है। Here. Wow, guys. I'm really hyped. We're so glad because we asked him if he would like to go another day with us because today is our last day here in Shillong Okay. area, Meghalaya. So yeah, we wanted to do as much as we can from our last day here. I thought India में And, last So we're gonna head out to many destinations today. Take you guys with us. Guys, These are hanging orchids, and they grow here everywhere. In the sacred forest also, we saw on each tree hanging. It's really epic nature, I have to say. Now deep in the cave. Oh, This gives me Vietnam. Vietnam, we did also cave exploring, guys. In Phong Nha. it is adventurous. And is this बहुत like a real ज़्यादा। cave system here? You know that, or is it just like a little bit? No, there's ghosts around. One time around. Okay. अच्छा, It's not one of the bigger ones. Okay. This is a small cave, guys. है वो काफी ज्यादा वो बंदे को चाहिए नहीं, हिम्मत चाहिए। घुटन तो नहीं होगी मेरा ख्याल है यहाँ पे। पानी है ना, पानी है। देखो Is it glow in the dark? Is it from mushrooms or is that spider web? Not spider web. Not spider web. It's a plant. प्लांट Also, है, that's the roots. नजर नहीं आ ऊपर रहा। होगा ना। I don't know if you can. I don't नीचे know if the roots आ रही camera हैं। gets I'm not it in very the sure. dark. See, look at that part. Oh yeah, over there you can see it really. So it's hanging down. It's growing through the mountain. It looks really different. is it the Bat Cave, guys? Are we Batman cave here? काफी I'm बड़ा probably केव biggest है। Batman, guys. We're going out. अब दूसरी साइड से बाहर निकल आए हैं। यार कितना खूबसूरत है यार। And there the fog ऐसे की पूरी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। climbing out of the हाँ cave. तो हम लोगों ने भी तो देखा था जो केव में, Really हाँ। उसमें quite भी प्रॉपर foggy. सीढ़ियाँ बनी हुई थी। Looks really amazing, I have to say. Now we're out in the open again. Sorry for Nick climbing up. Oh yeah. This is epic. No, should I take a shower? वाटरफॉल। Oh, I think. But I यार think it's a ये little ऐसे लग रहा high है pressure. जैसे आप कुछ बहुत contrast to the ही Indian दूसरी showers, दुनिया में guys. चले गए। हाँ, Smash me if I go there. इमेजिनरी No, वर्ल्ड you लग will रही smash है। the waterfall. I can't handle waterfall. She's cooking over there. कुछ बना रही हैं। Making the fire. मे बी मैगी। Cooking. मैं भी Really हो looks epic सकता and है। it falls down quite a while. Gotta take care not
to slip and fall here. Everything is quite wet, and you can see the fogs coming down. Whew. Oh my god. Nick the आप Explorer. शहर के पीछे Let's जा take a shower. सकते हैं। इसकी फुहार जब पड़ती होगी। हाँ मजा बड़ा आता होगा। ये मेरे से लास्ट पॉइंट है। किस शहर की भी जा सकती It होंगी। really trips to all the locations. Whew. Wow, But this is very epic, guys. I never stand under a waterfall, but I'm getting so wet now. Whew. You're not wet, Kariko? So far no. I've carried extra. तो मजा आता Yeah, है I ना। think you need some change of हाँ। clothes, guys, because you really get wet a lot here with the dripping caves. But this is really epic, I have to say. I like it. Guys, Nick is lost in the forest. He went the wrong way. I don't know. He just went away. He's gone. He's over there. नजर आ रहे? Nick is Nice. an explorer. मुझे भी No नजर आ fear. रहा। This goes cross path, wrong way. I think there in the back is coming again. And is this the biggest waterfall here or no? इससे भी ज्यादा। It's beautiful, but not the biggest. Not the biggest. आगे और भी Okay. हैं। This gets done under it. That's really cool. I never stand under a waterfall. Oh lord. Now we down दूसरी at the side से waterfall, भी है guys. ना। सामने से। What is this stone? Is this limestone or a different one? You know that? Could be lime, could be sandstone as well, but Sandstone? I'm not sure. Okay. You think I could stand under this water? Will it be like a shower or will it be more pain when I stand under there? You can try. Want a shower? My butt doesn't move. Hey, we're climbing down. नीचे जा रहे हैं। अच्छा As you can नीचे see, एक it's और like झरना really है। cascades. It's down. But really epic nature place. Wow. Impressed. And there's like multiple stops, and all the stops are really epic. And I have to say, the water quality looks amazing here. So I think you can also drink because there's more water here. Ooh, स्लिपरी होगा बहुत। slippery. I can ग्रीन ग्रीन है ना। पानी बहुत देखो हाँ। वो उसकी वजह से। My shoes are already so wet, but look, this really green turquoise pond. Looks really epic, guys. Go in the water. Should we head ज़्यादा back our पानी ठंडा होगा webshorts ना? and go हाँ। bathe here, guys? Should we walk under there, under the waterfall? Let's go. Explorer mode, guys. POV Explorer. Hoppa. इधर भी नीचे लगता है। It's really loud again. You can see it in my face. रास्ता नहीं मेरे हाथ में बस यहाँ नहीं पूरा रास्ता बना हुआ है। मतलब आगे जा सकते हैं क्या? And under a waterfall. I don't think you can hear me, but nevertheless, epic. Look how massive the current comes down here. I really like it, guys. Once in a lifetime. Seriously होना Very चाहिए। good. And as always, Noah gets asked for selfie pictures, Noah. Okay, Everyone in? let's sneak on the picture now with the camera. देखो वो जैसे बादल। बादल नहीं है ये ये fog। fog है हाँ। It's always so much fun, funny guys, because we get asked so much for the pictures, even in Delhi. Thank you. Okay. Good picture. Okay, We made some. very nice, guys. It's so funny, but it's really nice. I feel like we already big YouTubers, but we not. But Noah, how does it feel to be a celebrity? And now onto the bamboo bridge, guys. Okay, It's always with me here with my blonde hair. onto the bamboo bridge, man. Feels a little bit wobbling. But this, Noah, is this German engineering here? I don't think this is German TÜV approved, guys. Can you approve that as a future engineer? If I work at TÜV, I would say no, unfortunately. Oh, but this looks stable, the springs. And it looks really nice. Looks good, yeah. Looks fine. Looks really, really nice. And I think bamboo is very stable, guys. Wow. They get us the water here. You can drink out of bamboo, guys. That's the natural glass, the natural cup. Wow. But I पानी look जमा at हुआ the है अंदर bottom बारिश one का। here. It's really wet, so hopefully it doesn't rot over time.
ब्रिज keep on changing. काफी डिफरेंट फर्स्ट टाइम इस तरह का ब्रिज मैंने देखा है मैंने भी Here's the people. Always traffic in Shillong, you know, guys. नहीं छोटी छोटी चीजें कितना टूरिज्म Yeah, but क्रिएट it's करती Sunday, हैं so of course there will be some people, guys, but that's no problem. When Your you have nature a country lovers with will. 1.4 billion. It's normal that everywhere are people. Look at this. काफी लोग हैं हाँ Quite high, I have to say. We have to wait. We have even a traffic manager here. Traffic manager. Yes. Oh, Just like the police in Shillong. yes, true. There's also They police. always police. Oh, but it's really nice, you know. And it's way more jungly than the last day we explored. It's here is really more jungle. Would be nice if they would hand me here a mango shake. Okay, I wait. Only 2. Bye bye. See you. Really nice. अच्छी खड़ी नहीं है यहाँ पे So guys, we wait till the red light's over and then we cross. अच्छा है हाँ मतलब वो ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना burden. चाहिए People always on the bridge. Oh, but look at this view. Really नाइस jungly. I feel like Acha. I'm in the, you know, Sara this bamboo hai Temple na? Run, guys. You know Temple Run from, I don't know, 2013 when it was a really nice app, and this reminds me a little bit of it. All on Tomb Raider. Really nice. टेंपल रन की there's बात the कर next हाँ traffic officer. Thank you. Thank you, sir. Oh, this looks really nice. That's very good. Thank you very much. Hello. Thank you very much. Wow. Well, guys, everybody friendly here. Good vibes here. Families. This is really tripping. This looks really nice. Oh, let's take a bamboo glass. She's having bamboo glasses. You can drink the water here. Bamboo glass for drinking. Okay. Okay. Natural drinking water. Okay, then we're gonna try that, of course. ओके Out of a bamboo. 100. Okay, let's take one bamboo bottle Yes. with us, guys. Yes. Really nice. This is. And it's even closable. That's cool. अच्छा है ना That's डिफरेंट really cool. ऊपर से बंद करने के लिए भी Just press it in firmly. Okay. Don't press it. I'll- Just rotate. Okay. Okay. Thank Okay. you very much. Bamboo water bottle, Noah. Let's try the water, huh? Try the water. Hope no diarrhea. No, it's mountain water. Yes. Fresh. Was a joke. Hopefully. अच्छा उधर से पानी लेते हैं Take a sip, guys. I'm really thirsty. Yes. आवाज Oh yeah. Okay. This is actually looks really cool. You think we can keep it? Or think will so. it what? But I think there's Will still it some. not go dead? Wow. There's some bamboo particles inside. ओके Shake it a bit. Yeah, but it tastes like coconut, the bamboo. Coconut. Yeah, a little bit. हाँ Okay. Now. हमने मे बी वो उसका टेस्ट आ रहा हो वही तो कह रहा From a spring. उसका बेम्बू का ना बांस का टेस्ट Very good water. Wanna try? Okay, I'll also try. वैसे अच्छा है Yes. नेचुरल It's true. It smells like coconut, right? Yeah. हमने कभी ज्यादा water taste. स्मेल ही नहीं किया हाँ And this thing gives me a really good thing. You wanna try? It's like a ritual here. Very good. Let's fill it up and then head out again. Yeah, let's take it with us on our trip. But guys, it's really quite clean. Really cool. It's a really cool thing. Take it. So wet it drips down here. Fill up and then we go back on the bamboo. Okay. It's really nice. Let's head out. वापस जा रहे हैं Back on track on the root bridge, guys. On a root क्या bridge, आगे जा bamboo रहे हैं bridge. नहीं वापस जा रहे हैं With Bamboo the water. water bottle. Wow, Okay, now. I like those things. This is really, really cool. And 100 rupees, so fair price, really. They could have charged so much more. That's what I really have to say. In all these touristic places here in India, even we as foreigners get a fair price and get treated really good. So we also had this in other countries, really different, where we got always charged so much for seeing the places. And of course, if you're here, you want to see the places. So it's really fair, and for our guy it's even cooler. So shout outs to him again, and definitely recommend come here. Thank you, traffic manager. Okay, see everybody friendly, really nice.
Really, देखो ये really चीज good. रोहित में Experience दरख्त today. कितना प्यारा लग And रहा this है is only ग्रीन the first सारा place, guys. हाँ. We're gonna go to so much more places. See so much today. I'm so hyped. But maybe eat something first, no, huh? Thali would be nice. Oh, Charlie. So guys, so I'm so hungry, guys. We didn't eat anything. We wake up at 7 today, and now it's 9, huh? It's 10. 10? Almost 11. Yes. Ah, you drive Drive here. 2.5 You drive here hours. big distances here. This reminds me a little bit of USA and Canada when you like. It's this on the map, but you drive 3 hours. So guys, let's head out. Okay, guys, on to the next place. Which is the next place? I think so we'll do Arwah Cave and after that we'll have lunch. Okay, perfect. So let's head out. स्विफ्ट की टैक्सी बनाई हुई है स्विफ्ट की We're really टैक्सी proud of that now. Let's head out to the next place, guys. स्विफ्ट ही लगी वैसे मुझे ना वो Guys, we made it to the next destination. And Kazi वाओ is the view Nice of Bangladesh. point. So all ये over बादल there आए is में Bangladesh. नीचे Right? There, all over there is Bangladesh already. बांग्लादेश The water after the hills, Uh-huh. it's all Bangladesh. Oh, this looks really nice with the valley here. वाओ All up top there you can see Bangladesh. Wow, we're so near to Let's go to our Bangladesh. next country, guys. Oh, I want to also explore Bangladesh and Nepal, guys. Yeah, Nepal, really on the Nepal would be really on the list. So, but I think we have way more to do here in India. So much. Way more time work. spent. That's so crazy. Such a big country. Yes, so guys, this will also be not our last India trip. We will get some more destinations in, but we only have like 2 more weeks here. But we make the best. बांग्लादेश का of it as नॉर्थ always. पार्ट होगा And maybe है ना? Bangladesh and Nepal is next. Let's see. आई डोंट नो So, तो guys, मैं now it's time ज्योग्राफी for में cave. पीछे नहीं How हूँ long- मैं भी How long is this एक cave? तुक्का ही लगा रहा हूँ अनुमान 7 kilometers. 7 kilometers. Okay. So we're going inside the cave now. We're excited to see that. Guys, as you maybe know, in Hanoi and Phong Nha, we explored many caves in Vietnam. So we're really cave hunters, guys. So we're hyped for that. We've been to little caves now here, but this is gonna be a big one. But I think the camera always captures the quality in the caves really bad, so we have to see how the footage turns out. But nevertheless, I'm hyped for a long cave, guys. And I think it's gonna be epic. This is a unique picture, guys. Whoa. Really, this is so Jurassic Park vibes. Jurassic Park All these लेकिन कितना डिफरेंट है वो spiders. Where are the स्पाइडर spiders? वेब्स And he, with his safari hat, he looks really like in the movie Safari. I'm really jealous of his hat. So, yes, track we itna walked अच्छा out है. to the cave. This looks really, really nice. And the fog also opens up a little bit. So, maybe we're lucky and we're gonna see some things. Fingers crossed. Fingers for the crossed. 7 Sisters, guys. 7 Sisters. Biggest waterfall around here. We want to see it. Am I in heaven? Is this heaven already? I don't know, guys. But it feels really good. I really like the temperature here. And now we really can't see anything. And look at बादल this, and we straight up in the clouds, I guess. And there it goes down, down, down. It's वो really, गाना really याद आ रहा nice है बदल आगे sight जमीन here. पे And, oh, guys, really. Look at this amazing view. I'll tell you how this cave was found, okay? This cave has always been here, but then they found it just about 10-12 years back. Okay. They found it because before there was, during British time, Yeah. there was a Khasi warrior who fought with the British. And what he did was that, I think he must have killed some British officers and he was running away from the British. He needed to hide. He needed to hide. Down there, there used to be a cave. यहाँ पर वो छुप जाते होंगे We think that he hid there, and so that's what, and everyone forgot about that person. Okay. Then one day, one of these villagers, they came searching for that his body, his remains, and accidentally they found the cave. Wow. That's awesome. And this is a huge rock. Where you have all this knowledge from? Like, where you know this from? I listen to people. You study it. Yeah, I study and I listen to. I meet people. Nice. वैसे केव तो नजर नहीं आ रहा ना Normally. We unfortunately don't see it, but you see the vaguely. It's just like really down like this. And there's the waterfall. You can hear the waterfall, but don't see it unfortunately because the fog is really dense. The fog is really, really in there. I feel like I'm in a cloud.
Looks like from the movie Avatar. Yeah, the yeah. blue Avatar. Avatar, not the. This one. It's amazing, really. I'm hyped for the cave. And nature we didn't see so far, guys. This is really a recommendation, guys. And like I said, everybody looks at us like, what are you two guys doing here? So it's really funny. I think I almost took like 20 pictures. They're really nice. And like I said, we're in really good hands भागे here. जा रहे हैं. Karikor, 10 out of 10. Even if he is not a tour guide, he could be a one. Really nice. All the knowledge here. With all the knowledge he has. So definitely check also out his nature channel. जानते हैं जगह Posts के really बारे nice में. videos. And the view only gets more amazing here. I think very less foreigner tourists see this now. Yeah, I think so too. This is very tucked away, and so far also monsoon. We did not see one foreigner tourist, just some Indian tourists. So that's really amazing that nobody goes here. Another thing is why here are no tourists, because I think it's so difficult to get here. Without him, like I said, if you have to hire a cab or something like that, it won't work. I think so. You pay so much money for those cabs and you drive so long hours, and the places are really tucked away and you have to know exactly where to go. So this guy been to many of those places already, so we were so lucky, guys. Wow, guys, this feels really like so untouched nature. And what I have to say, this is really good. We almost saw this at no other tourist place what we visited, that they have like trash bins and people really use the trash bins, you know? ये They अच्छी चीज़ है. give हाँ something क्योंकि about नेचर You वैसे don't हम throw- भी हाँ, करना फेंकना नहीं बस ये वहाँ प्लास्टिक पे. वगैरह. throw it in the trash like it should be. Oh, ठीक है. Cave entry into the Bat Cave, guys. this looks really Batman and scary. Robin exploring the Bat Cave. This looks really scary. I So think I wow. would not enter here. तुम जा सकते हो इस That's जगह it, में. guys. वैसे तो वो है बहुत ही कंजेस्टेड. मेरे हाल में एंटर भी नहीं हो सकता. Okay, guys. Batman enters the Bat Cave. Wow, really, really The nice. epic entrance, I have to say. I think the camera won't do justice to how it is in real life. So definitely come here. And wow, with the stairs, it's really nice. Of course, there are also some ये तो other खुद people, बनाई होगी ना. but Stairs I have हाँ to say, खुद बनाई for होंगी. such a nice place, लेकिन fairly, cave. less people. Guys, there's this under cave river flowing all through the Okay. cave. It's really पानी अंदर बह रहा quite a है. different experience also. And you see it carves away really quite cleanly. We are a horror movie, guys. But होता है. thank God there are some lights, because if not it would be pitch black in here, guys. Like the dark cave we explored in Vietnam. But you can see the river really flows all through the ये cave. इंटरेस्टिंग है. Take care, no slippery. ज़मीन के अंदर क्या कुछ Bollywood होता है. Batman. Bollywood Batman. मैं Nick कहती applied हूँ for the role. पहाड़ों के Somebody said you look अंदर. like Bollywood actor. मैंने Yes. So maybe there's gonna be a spin-off in the future. Who knows, guys? I'm gonna be cricket pro. Nick is gonna be the Indian Batman. Noah's just living the Indian vlogger style. Of course you can take a picture. Thank you. Thank you very much. Okay, have a nice day. Guys, So guys, I also got asked for a picture, yeah. That's not okay. Millions of years and people are spoiling it by like Yeah, there are always people who disrespect it. Wow. But now it gets really नीचे ऐसे मिल dangerous, रहा है guys. I जैसे think you don't turtle है. can see it on the नहीं camera, नहीं. but we have to get Oh my God. ऊपर Watch चढ़ out के for जाओ. the step हाँ. here. Okay, let's go here. कहाँ से पानी आ रहा है? It's really slippery. पता ही नहीं guys. है मुझे तो नहीं पता चल रहा. अभी We're अंदर really लाइटें doing it लगाई now. हुई है. लाइट ना हो तो कितना अंधेरा We're हो. really doing it now, and you have to watch your head here properly. Are we going deeper, deeper? लेकिन है मजे Noah, की you जगह. still alive? ये पानी आ कहाँ से रहा होगा I अंदर wish से? I would be 140 right now. I can't do it. That was good again. Oh, Wow. But it's actually very epic. पानी की And वजह it's से. really good air, I think, because of the water. Normally it's very dusty, musty in caves, but here I would say fairly fresh air. wow, now it's dark now. Let's put on the flash here.
कुछ समझ नहीं लग रही। Oh my god, guys. If this is not worth a like for you guys, then I don't know what we else should show. We're doing it really. यहाँ पे end है। I thought Big man. I thought that's outside, but it's only fake light. Wow, how long does this cave carry on more? Lighted. This is about इसमें 500. आधा किलोमीटर तक लाइटिंग है। 5,000. No, the lighting is only for 500 meters. 500 meters. Okay, half a kilometer, guys. You can basically walk here under the world. लेकिन आगे पता नहीं कितनी होगी। It really बस gives आई me थिंक बाइट मिले goosebumps. पानी कितना साफ है। हाँ शफाफ। With the water, the climate is actually really good. And look at this. Under the earth, also like ऐसा लग रहा है दोनों साइडों पर हाथ हैं। हाँ This shape is now made for Germans, guys. अच्छा, Look अभी at भी this. और बाहर Oh my निकल रहे God. हैं। I can only walk here with my hand. Indiana Jones, Noah. Really, नहीं नहीं Indian Indiana end है। Jones. you feel like a real explorer when you do this. This is really cool. And then the spider comes out. Wow, it carries on and on. We go on? No, we can almost come back. ओके We do more or less this. अब यहाँ से Okay, वापसी। then we just turn back, huh? Also, it's time for us to eat also. Yeah. Hungry, guys. We Okay. need to get some tali in, but that's gonna be in another video. Wow, guys. End of the cave. Out again in the misty forest here. Was a really epic adventure, but I think the footage is gonna be a little bit too long today. What so the exploring day, guys. I think we're gonna do here 2 hour much more video. to see, yeah. So I think it's a little bit too long Okay, for the part footage. 2 अभी So we're gonna cut it up in 2 videos, guys. But it's gonna be भाई नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती की जो है ना जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि भाई अभी जो सबसे पहले हमने केव्स देखी, फिर केव से चलते चलते जिस तरह झरने के पास पहुंचे, भाई रास्ता बहुत खूबसूरत था। वैसे अगर हम मेघालय की बात करें तो क्योंकि आई थिंक मेघालय बादलों का ही बादलों की जमीन। हाँ एग्जैक्टली बोली जाती है। सो आज हमने वाकई में बादल ही बादल देखे, जो मौसम गाना बीच में गा रहा था ना, बदल ही आगे जमीन पे। वाकई में ऐसा फील हो रहा था कि बादल जो है ना वो जमीन पर आ गए हुए। लेकिन क्या खूबसूरत रास्ता, ओ माय गॉड। मतलब ये केव्स आप जब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो ना, आपको बिल्कुल एक डिफरेंट ही अनुभव देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे अपने एक्सपीरियंस की, क्योंकि जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम मतलब अभी जैसे थाईलैंड में हम लोगों ने किया था रिसेंटली, तो वहां पर भी हम लोग एक केव में गए थे। हाँ। तो सीरियसली आप ना एक अलग ही एक उस जगह की एक वाइब रहती है, आप बहुत इंजॉय करते हो। बट ये वाला मुझे उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगा। उसकी रीजन ये है कि एक तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बड़ा था, एक तरह से जंगल में हम लोग जा रहे थे, एक ट्रैक प्रॉपर बनाया गया है। फिर उसके अलावा जैसे झरने हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ना मूवी के सेट पर आ गई हुई हूँ। मुझे ये रियल नहीं लग रहा, और मुझे लगता है अगर आप रियल में भी देखोगे तो आपकी आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज में हमने देखा है कि ऐसे आपको सेट देखने को मिलते हैं। तो मैं कहूंगी कि अति सुंदर से भी अगर ऊपर कोई वर्ड होता ना तो मैं इसके लिए यूज करती। भाई हमने जो थाईलैंड में जो केव्स देखी है ना, वो बेसिकली आप समंदर के बीच में जो है वो आइलैंड से उनके अंदर जो है वो केव्स बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि अगर इनकी बात की जाए, ये पहाड़ों में जो है जिस तरह बनी हुई है और जिस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ था, और साथ जो है अगर आप देखें छोटा सा दरिया ही आप कह नदी, छोटी सी नदी आप कह रहे, दरिया तो नहीं आप कहेंगे कि दरिया बड़े होते हैं, छोटी सी नदी आप कह रहे, उसके साथ जो चल रही थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत जो है वो एक जो है ना उसे कर रही थी। तो मुझे लगता है कि भाई ऐसे ट्रैक पे चलते हुए ना आपका जो एक मेंटल कंडीशन है वो बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल जो है वो हो जाता है। आप जो है इंजॉय करते हैं नज़ारों को, क्योंकि बिल्कुल ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और ग्रीनरी जहाँ पर होती है ना तो उसे देखकर आपकी आंखों को ना वैसे ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि देखो इंसानों को पता भी है कि नेचर से उसको कितना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन हम इतने दुष्ट प्राणी हैं कि हम लोग फिर भी नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। और देखो जहाँ पर नेचर है वहां पर हम लोग उसको जब देखते हैं, मतलब पानी को देख लो, ग्रीनरी को देख लो, पेड़ जंगल कुछ भी आपको इतना ज्यादा वो खूबसूरत लगता है और आपको कहीं ना कहीं पर सुकून दे रहा होता है। यार सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। अभी देखिए जैसे हम ये देख रहे थे, ठीक है ना, अपनी आंखों से देखने का अपना मजा, लेकिन ऐसी जगह पर आप बैठे हो ना सुकून से और खाली पानी की आवाज को फील कर रहे हो, तो जो फ्रेश ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ आपको एक पानी की आवाज सुनने को मिलती है ना, तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स करता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद भाई हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से वो एक बैम्बू के ट्रैक पर गए जहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी एक महिला खड़ी हुई थी। सो वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि देखो जैसे लोकल्स हैं जो उन्होंने बैम्बू का ग्लास 100 रुपए में कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कितने मतलब एक आप कह लो ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। और उससे पहले हमने देखा था कि एक लेडी कुछ बना भी रही थी जहाँ पे एग्जैक्टली। सो देखो इतने सारे पॉइंट हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान जब नेचर को एक्सप्लोर करने पर आता है उसको ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें मिलती हैं कि वो हैरान हो जाता है कि भाई क्या दुनिया में ये चीजें भी। और सच में मैं ये बात सोचती हूँ कि पता नहीं हम लोग किस जन्नत के चक्कर में पड़े हुए हैं। जन्नत तो यहीं पर है। जब आप दुनिया में देखते हो ना इतनी हसीन जगह, जैसे वो बोल रहे थे कि बीच में ब्लॉगर कह रहे थे ना कि क्या मैं जन्नत में हूँ। मतलब इतना खूबसूरत एक समा, इतना खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगी कि वाकई में ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो कि लाइफ में एक मर्तबा करना तो जरूर बनता है। ये बिल्कुल, मैं तो खुद चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो हम भी जो है ये एक्सपीरियंस अपनी इन आंखों से जो है वो फील कर सकें। क्योंकि वाकई जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, आपको जो है ना, आप कह लें कि आप उस जगह को ना अपने आप जो है उस जगह को कह देते हैं भाई मैं इस जगह का ही हूँ। इतना आप उसको मतलब हवाले कर देते हाँ, उस जगह के। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक और चीज जो है बहुत अच्छी लगी, नो रोड बैम्बू का जो ब्रिज था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। वहाँ पे लोग जिस तरह गाइड कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा भी जो है ना, अगर लोगों की तरफ से देखा जाए तो जो वो रैपर्स लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो डस्टबिन पड़ी हुई थी आप वो उसमें फेंक रहे हैं, बजाय इसके कि आप पहाड़ों में फेंक दें या इधर उधर फेंक दें और वो बाद में जो है नेचर को हार्म करे, आप वहाँ पर फेंक रहे हैं। तो ये चीज है मुझे लोगों की तरफ से बहुत अच्छी लगी। और आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है ये देखने को भी चीज मिलती है कि मोस्टली जगहों पर प्लास्टिक बैन है वहां पर। मुझे लगता है फाइन भी मैंने पढ़ा है कहीं पर है कि अगर आप फेंकोगे तो आपको फाइन। बिल्कुल याद है, हमने जुको वैली की हमने एक वीडियो देखी थी तो वहां पर तो वो प्लास्टिक बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा आपको प्लास्टिक जो है वो लेकर जाने नहीं देते। लेकिन क्या नाम लेते हैं, अगर आप लेकर जाते हैं तो आपने वापस लेकर आना है। अगर आपको आप फेंकते तो मेरा ख्याल 1000 रुपया जो है वो फाइन था, 1000 INR। एक और जगह हम लोगों ने देखी थी जहां पर आपको फाइन किया जाता है अगर आप मतलब इस प्लास्टिक फेंक दें, प्लास्टिक या कोई भी कूड़ा वगैरह फेंकते हो। दूसरी मैं बात करना चाहूंगी उस पॉइंट की जहां से बांग्लादेश नजर आ रहा था। वो भी बहुत खूबसूरत जगह थी। मैं एक चीज फील करती हूँ कि आपको जब दूसरे कोई कंट्री का एक तरह से वो बॉर्डर एरिया ही हो गया ना, आपको नजर आता ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अच्छा हम यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे कंट्री को देख रहे हैं। याद नहीं जब हम कश्मीर गए थे तो वहां से जिस पॉइंट पे हम खड़े होकर हमें इंडिया नजर आता है, हालांकि वाघा बॉर्डर पे भी आपको इंडिया नजर आता है लेकिन वहां की एक्साइटमेंट अलग है यार। वो तो अपनापन इसलिए वो तो एक अलग ही लेवल होता है मुझे लगता है। वहां पर वो आप जो अपनी भावनाएं है ना वो आप मतलब शेयर नहीं कर सकते, वो शायद आपके चेहरे से ही पता चल रही होती हैं। और लास्ट में जो केव था और साथ में एक छोटी सी नदी जैसे मौलव ने कहा कि बह रही थी, मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज ये है कि जो भी टूरिज्म का डिपार्टमेंट है या जो गवर्नमेंट लेवल पर ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने ये सारी जगह जो है प्रिजर्व करके रखी हुई है, ये एक्सप्लोर की है और लोगों के लिए एक मैं बोलूंगी कि ऑप्शन निकाला है कि वो भी नेचर को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। सो मुझे लगता है कि इससे नए आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होता है, गवर्नमेंट के लिए भी होता है, फिर लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और कितना एक यूनिक वो एरिया आपके लिए बन जाता है। तो मुझे तो बहुत बहुत मजा आया आज की वीडियो देखकर। अभी सेकंड पार्ट आने वाला है सो वो भी हम लोग देखेंगे होपफुली, अगर आप लोग हमें रिकमेंड करेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन मेघालय गया हुआ है और कैसा वेदर आपको वहां पर फील होता है और इसके अलावा कौन कौन सी जगह हैं जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।